बैटिंग बॉलिंग करते हुए वक्त ना जो भी याद रखना, आप पूछते ज़रूर रहा करो। एक तो टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी जो बात होती है ना, जैसे कल हमने सिर्फ बैटिंग पे कंसंट्रेट किया, ठीक है। अभी आज नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे, कल हम बॉलिंग पे कंसंट्रेट करेंगे कि बॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊंगा, ठीक है। आज बैटिंग इस तरह होगी कि 2 नेट्स होंगे और तीसरे नेट पे हम वो नहीं है अंडे बॉल, उससे स्विंग बॉलिंग की एक तो खेलने की प्रैक्टिस और बॉलर्स को कि मुझे कंट्रोल है, ये मुझे आप कहोगे कि इन स्विंग कर, मैं इन स्विंग कर रहा हूँ, मुझे कहोगे आउट स्विंग कर, आउट स्विंग कर रहा हूँ। इसका मतलब है आपको पता चल गया कि बॉलिंग कैसे करनी है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है। जैसे आज वो बॉलिंग कर रहा था ना, क्या नाम है उसका, यासिर, ठीक है। वो बॉल तो तेज कर रहा था लेकिन वाइड बॉलें हो रही थी, तो उसको थोड़ा सा मैंने आगे, जैसे एक बॉल पे खड़ा हुआ, उसने अगला बॉल ही अंदर किया। तो ये चीज़ें ठीक आहिस्ता आहिस्ता साथ करते रहेंगे, लेकिन बेसिक वही है, ठीक है। तो कि मैं जो कर रहा हूँ वो आपको समझ होनी चाहिए कि ये बॉल मैं इन स्विंग कर रहा हूँ। सिर्फ हम लोग खेलते थे ना, तो वो सिर्फ उस विकेट पे होता था कि जिसमें ना ग्रासी विकेट है, वो पंजाबी च कहते हैं गंडा वाली विकेट है। गंडा वाली समझते हो, गांठे हैं जिस पे, खड्डे नहीं गांठे, की कहते जी उन्होंने, जड़ा वाली विकेट। आप समझ आ गई? वो जड़ा वाली विकेट पे इस तरह होता है कि सम टाइम आप बॉल इन स्विंग करते हो, आउट स्विंग हो जाता है, वहाँ पे ज़रूर होता है। क्यों? वो बॉल पड़ता है ग्रीन स्पॉट पे, वो इधर निकल जाता है या इधर निकल जाता है। लेकिन जो नॉर्मल विकेट होती है, जैसे ये विकेट है, फिर इस पे ये है कि जो मैं कर रहा हूँ वो हो, ठीक है। कल से मैं वो बॉलर्स के लिए वो भी लगाऊंगा, स्पिनर्स के लिए, कि वो रस्सी दो जैसे पहले लगाते थे, उस पे आप स्पिन करना सीखोगे। एक तो लाइन लेंथ, दूसरी चीज़ स्पिन। ये कल की जॉब है। आज हम इस तरह ही करेंगे कि नेट्स करेंगे और उसके दौरान में उसको मैं लड़के देता रहूँगा, 8-8 करके ना, 8-8 9-9 जितने भी 10-10 कर लेते हैं। 10-10 कर लेंगे, चलें ठीक है, 10 कर लेंगे। और बाकी उधर प्रैक्टिस करेंगे, और वो जैसे ही बताया 2-3 नेट्स होंगे और एक वो बॉलर्स के लिए होगा, ठीक है जी। अभी 7 मिनट की ब्रेक है, 7 मिनट से पहले आप उधर आ जाना, उतनी देर में मैं लड़के निकाल भी लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Walk, bang. Walk, catch over my head. Yeah? Not. Games are won and lost. You know where most games are lost? First 5 overs. First 5 overs, bowlers, you don't have 6 balls to warm up. Ball 1, bang. Batsman alert, bang, off. Fielders alert. Fielders there. Oh, no, thank you. So that's why we warm up with high energy. So ball 1, you're here, come on. I'm ready for you. I'm ready for you. Now I see this. Hands off hips. That just tells me that you're tired. I don't want to see that. That's teapots. You see that in the field? Understand the difference? 1%. Warm up, bad warm up, your coach is going to not be very happy. Your captain is not going to be very happy. So it's all about alert and energy. Use aggression in here. Okay, last one. You want to achieve greatness within your life, within your bubble. That's all that matters. Not his, not mine, not yours. Yours. To be unique, to be an individual, is not to be a follower. A lot of people get caught out, copy, paste, copy, paste, copy, paste. Chapati, roti, biryani, vegetable, paya.
It might taste nice, Yes. but you want to be cricket players, then you have to change elements of your routines. I change, but I change to suit me. You change to suit you. Okay. Population in Pakistan must be well over 250 million. Yes. Yeah? Yes. Yes. How many millions do the same as their friends, their family members, their peers, their colleagues? You all do. To be unique, to stand out, is not to just look on your phone and look on YouTube and go, oh wow, he can do that. Think what you can do. The reason I speak in English, right? Throughout your lives, you are going to speak to people that speak English. I try to speak Urdu the best I can. ठीक है? But if you work with other coaches from South Africa, from New Zealand, from Australia, from Sri Lanka, they're going to speak English to you. Yeah? So it's confidence. If you get it wrong, no problem. Richard Bye. Perfect. Not Richard Sir, Richard Bye. I'm your brother. Yeah? And together, over the next 10, 11 days, trust me, this warm-up will become easier. You are in control. Yeah? The reason I say that is, listen, is because just live in the moment. Me and Coach touched on this earlier. The way I try to operate, okay? The present, past, future, live in this bubble. Control what you can control now. And if you walk away with that 1% knowledge, that 1% movement, that extra hit, that extra catch, that's 1% to better your career. Yeah? I watched earlier, the boys were doing some batting. I don't know what the drill was. I don't know what the skill was. You try and whack everything out the park. If that's what you're working on, that's fair enough. That's your routine. Other boys were knuckling in a little bit. But what I want to see, boys, at practice is a little bit more energy and enthusiasm. You notice when I fielded, where was I throwing the ball? The keeper. Why? I've not thrown a ball for 3 months. I just wanted to loosen my arm off. Within 6, 7 balls, I felt better. And I thought, here we go again. But I'm doing that for me, about good habits. Just because you are centre wicket, that doesn't mean that you can't have good habits. If the ball, wicket keeper, the ball's going there, the ball is here. You stand there and the bowler stands there. Get the ball, get back, ball again. Get the most out of training, practice, skills, whatever. What you do here will have an impact here. Tiga? Right, Coach. Okay, thank All you. yours. Thank you. Well done, guys.